Before we start today's event, I request all of you to please share it on your convenience with your family and friends, and let's spread more word about our initiatives that we are taking towards our great Hindu community. Vakratunda Mahakaya, Surya Koti Samaprabha, Nirvighnam Kuru Me Dev, Sarvakaryeshu Sarvada. Let's begin today's event by invoking Sri Ganeshji with Ira and little Arya. गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरम् पादपङ्कजम् विघ्नविनाशक गणपतिनाथादिना रायण भगवान् विघ्नविनाशक गणपतिनाथादिनारायण भगवान् आदिनारायण भगवान् आदिनारायण भगवान् आदिनारायण भगवान् आदिनारायण भगवान् विघ्नविनाशक गणपतिनाथादिनारायण भगवान् गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया मोरया रे बप्पा मोरया रे मोरया रे बप्पा मोरया रे ओम श्री गणेशाय नमः। Thank you so much, Ira and Arya. As we all know, today we gather to celebrate Mahashivratri, organized by Naha Nari Shakti. North America Hindu Association, known as NAHA, is British Columbia-based registered society in Vancouver, Canada. We are dedicated volunteers working ambitiously to help NAHA carry forward its mission. NAHA's mission is to protect and promote the well-being of Hindu North Americans at par with all North American citizens and connect our young ones with our incredible culture. We are working toward our vision by taking initiatives towards education, public policy, and community engagement. NAHA team organizes weekly Gita sessions on Sundays evenings. These are incredible sessions, everyone. Please share with more of your families and friends. They're very, very close to our daily lives and tell us techniques to implement on a daily basis. Our weekly yoga sessions, especially for ladies, are very good on Sundays, and Vedic math classes, positive parenting sessions. Last year, we held Shriram Summer Camp in July and August for the kids, and also in the fall, Veda Parche and Intro to Hindu Vedic text. Festivals, celebrations, just like Janmashtami, Mother Day, Father's Day, Akshaya Tritiya, Independence Day, Diwali, Lohri, and many more. Today we are here to celebrate the greatest Hindu festival, Mahashivratri, that is celebrated on 13th and 14th of Falgun month, according to Hindu calendar, in the month of Magh, according to Vikram Sambat calendar. It occurs in the month of February or March, according to English calendar.
The word Mahashivratri means the greatest night of Bhagwan Shiv. We worship him and his reverence on this night. To begin with, let's chant Om Namah Shivaya with Adya Jagnesh. Adya? Hello. Namaste. We can hear you. Bolo bolo sammil bolo Om Namah Shivaya. Bolo bolo sammil bolo Om Namah Shivaya. 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 Bolo bolo sammil bolo Om Namah Shivaya. Bolo bolo sammil bolo Om Namah Shivaya. जूट जटा में गंगा धारी, जूट जटा में गंगा धारी, त्रिशूल धारी डमरू बजावे, त्रिशूल धारी डमरू बजावे, डम 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 डमरू बजे, डम 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 डमरू बजे, गूंज उठा ओम नमः शिवाय, गूंज उठा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः Thank you so much, Adya. It was very beautiful and very touching. Monaji, can you please check? I think her volume got a little bit lowered when going on. Yeah, it was an issue at their end, so we should be okay for the next one. Thank you. Bhagwan Shiv is also called Adidev, infinite with no birth or beginning and no end. Now, Anya, Sanvi, Shalini, and Shreya are bringing dance performance for Adidev Shankar. Let's begin with that. जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या
जिस तरह मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा ललाट पे भस्म है भुजाओं में वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में प्यास क्या हो तुझे गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया मांगा कुछ कभी नहीं तूने सिर्फ है दिया समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा अमृत सभी मैं बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा रुद्रदेव हे महेश्वरा रुद्रदेव हे महेश्वरा Thank you so much, all beautiful girls. It definitely created a great, charming environment all around. Let's all know from Agastya, in form of song, the importance of chanting Om Namah Shivaya. Is it my turn? Yes, it is. Agastya. सब गड़बड़ हो गया तुमसे Agastya. Yes. So sorry. I'm sorry. Okay, you can begin now. सुबह सुबह ले शिव का नाम Shiva
नीलकंठ को कोटि प्रणाम, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का शिव के चरणों में मिलते हैं सारी पीर। शिव के हाथों में प्रणाम, It's done. Thank you, Agastya. You Shivratri Puja is done in 4 prahars with bilva leaves, which are very dear to Bhagwan Shiv. In our ancient scriptures, it is exclusively mentioned that on one night of Mahashivratri, if you worship Bhagwan Shiv knowingly or unknowingly, consciously or unconsciously, your life transforms in a great way. Let's listen to the story of Nishad Raj, who inadvertently dropped bilva leaves on Shivling from Kavya and Soham.
One day he went deep into the forest and lost his way. As darkness fell, he heard growls of wild animals. Kavya, we are unable to hear Shivam beta. He has to either come closer. We are only able to hear you. Okay. Can you guys start over, please? Can we just check our mic first, maybe? Yes, please. Go ahead. No, he's not coming out clear at all. Well, Change the direction of the camera. we can. Anyway, no, sure. Talk. Hello? You have to talk really loud so that we all can hear you, beta. Okay. Lubdak was a tribal who would go into the forest every day to collect firewood. One day he went deep into the forest and lost his way. He couldn't return home before nightfall. As darkness fell, he heard growls of wild animals. He climbed the nearest tree for shelter till morning. This happened to be a wood apple tree. A bell tree in Hindi. To stay awake, he rested on the branches. He was afraid to fall asleep and fall off the tree. To stay awake, he decided to pluck a leaf at a time and drop it all while chanting Shivji's name. When sun rose, he climbed down and saw Shivalinga at its base. He realized that he had unknowingly dropped 1,000 leaves on the way. This unaware all-night worship pleased Shiva, by whose grace the tribal was rewarded with divine bliss. Which is the reason why some devotees stay up all night. Happy Mahashivratri! Thank you so much, Kavya and Soham. Now let's watch a divine performance by a very talented young boy, Advait, and his blessed mother, Lakshmi ji. Sorry, I do not see Advait, but Lakshmi ji's video. Okay, I have the video. I will be playing the video. yeah, got it now. Okay. I need to open the video. Hold on, I have to share first. Give me 1 second. Hope you can see my screen, and please let me know if the audio isn't coming well. On this auspicious occasion of Mahashivratri, my mother will be performing a Carnatic fusion song, and I will be supporting the rendition under the rhythm. The song is Bo Shambho, composed by Swami Dayananda Saraswati in 1930. The lyrics are in Sanskrit, the ragam is Revati, and the talam is set to Adi. This song is a tribute to the Mahadev, who personifies the god of Guys, sorry. I'm sorry. on the world's highest stage. This song is also an expression of devotion and worship to the cosmic dancer Lord Shiva. Shambho, Shiva Shambho, Swayambho. Shambho, Shiva Shambho, Swayambho. Shambho, Shiva Shambho, Swayambho. Shambho, Shiva Shambho, Swayambho.
शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो निर्गुण परब्रह्म स्वरूपा प्रपंचरहिता निज गुणरहिता निज गुणरहिता आनंद अतिशय अक्षयलिंग आनंद अतिशय अक्षयलिंग शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो दिनि 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 गिर गिर तोम 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 गिर 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 तोम दिनि 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 गिर गिर तोम 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 गिर 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 तोम गंगा गिर शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो Very beautiful performance, Advaita and Lakshmi ji. Our next performance is Nirvan Shatkam. Nirvan Shatkam is a devotional composition consisting of 6 verses or shalokas, and hence the name. Shatka means 6 verses in Sanskrit, written by Hindu Dharam Guru Sri Adi Shankara ji, summarizing the basic teachings of Advaita Vandana, or non-Hindu or non-dualism in Hinduism. It was written around 800 CE, Common Era. Shubhaji is bringing recitation of Nirvan Shatkam to us. With Swati. Thank you, Suniti ji. So I will chant. मनोबुद्धिहंकार चित्तानि नाहं न चाश्रोत जिह्वे न चाघ्राण नेत्रे न चाव्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न चा प्राण संज्ञो विपापञ्च वायु न वा सप्त धातुर्न वा पञ्चकोशा न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मैनैव मात्सर्य भावा न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शंका न माजे जाति भेदा पिता नैव मैनैव माताश्च जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्य
चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो बधुत्वात् सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतिनैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं धन्यवाद. Thank you so much, Shibhaji and Swastik. I want to tell all of you one more time, since we will be sharing this video with our family and friend. Shibhaji is the one who have our energetic Sunday yoga sessions for ladies. They're very good. Please come forward, more and more people, and join those classes. Our next performance is by Rujla Iyer, Shiv Panchakshar Stotram. The beauty of this stotram is ending line of each verse relates to the element represented by each letter in Na, Ma, Shi, Va, Ya. Pay attention to Na Kara in the first verse, Ma Kara in the second, Shikara in the third, Vakara in the fourth, and Yakara in the fifth. Rujla, please begin. Namaste. Happy Shivratri. नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाभ्यविन्द सूर्याय दक्षा द्वारनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकामाप्नोति शिवेन सह मोदिते. Thank you. Thank you so much, Rujla. It was very beautiful performance. Mahashivratri also marks Bhagwan Shiv's marriage with Ma Parvati. Shiv is inseparable from Shakti. Also, when known as Ardhanarishwar, he represents both masculine and feminine energy present in nature. Let's worship that feminine energy, Ma Shakti, with Rujla ji. Neeru ji. अनम्यूट कर लो. जय दुर्गा मैया की जय. नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योत तुम्हारी तेमो ली उजियारी. शशि लिलाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुट विकराला, रूप मात को अधिक सहावे, दर्श करत जने अति सुख पावे. तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीन, अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला.
प्रलय काल सब नाशनहारी तो शिव शंकर प्यार। शिव योगी तुम्हारे जश गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यान। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि अवार। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई पाड़ कर खम्बा। रक्षा करे प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आस। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा मित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदा। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खरग विराजे, जाको देख डाल ढर भाग। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठ शत्रु है शूला। नगर कोटि में तुही विराजत, तेहू लोक में डंका बाज। शुंभ शुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहार। महिषासुर निपति अभिमानी, जहियग भार मही अकुलानी। रूप क्राल काली को धारा, सेन सहित तुम सही संगा। परिघाड़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब। अमरपुरी औरो सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोक। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मन ताको छुट जाए। योगी सुर मन कहत पुकारे, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारे। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरे तुम। शक्ति रूप को मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्ब। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सुतावे, रिपु मूर्ख मोहियति डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मात दयाला, रिधि सिद्धि दे करुणिया। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक। हम आए तेरी शरण, मात लीजिए अंग। जय जय माँ शेरा वाली, जय जय माँ मेरा वाली। Jai Mata. Thank you so much, Neeruji and Kashri. Now, Anuji is going to chant some verses of Rudram Chamakam. According to Yajurveda, chanting of Rudram leads to moksha or enlightenment. It's a very long poetic creation, but Anuji is going to share a few of its verses with us today. Thank you so much. Anuji, please. Namaste, everyone. I'll change the chair. Right. Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Gananam tva ganapatihum havamahe, kavim kavinam upamashravastamam, jeshtarajam brahmanam brahmanaspatan shunvannodipis sidasadanam. Om namo bhagavate rudraya. Namaste Rudramanya Vahutota Ishave Namaha. Namaste Astudanvane Bahubhyamutate Namaha.
याथयिषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवासरव्या तवतया नो रुद्रमृडया या ते रुद्रशिवा धनुरघोरा पापकासिनी दयानस्तनुवा चन्दमया गिरिचन्दाभिसागसीः यामिषुं गिरिचन्दहस्तविपर्शहस्तवे शिवां गिरित्रतां गुरुमाहीहुं श्रीपुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिचाचावतामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मजुं सीमना असत् अत्यवो सतति वक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहुं च सर्वान् जम्पयन् सर्वाश्च यादुदान्यः असौ यस्ताश्रो अरुणभुत बभ्रुसुमङ्गलः येषे माहुं रुद्रा अपितोतिषुश्रिता सहस्रशो वैशाहुं हेडयीमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अतृषन्नदृशन्तहार्यः उदैनं विश्वाभूतानि सदृश्यो मृडयादिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे ॐ नमो भगवते ॐ नमः शिवाय. Thank you so much, Anuji. Om Namah Shivaya. Last month, the Nari Shakti team organized a Rudrashtakam class for kids. Rudrashtakam, as the name sounds, is a Sanskrit song consisting of 8 verses. Rudrashtakam was written by Goswami Sri Tulsi Das Ji around 500 years ago in Uttarakhand of Sri Ramcharitmanas, popularly known as Ramayana. Tulsi Das Ji was at Kashi Vishwanath temple in Varanasi at the time. Let's begin with Rudrashtakam Stotram with the kids that we recorded a video for all of them. Rudrashtakam. Today we have learned to recite 8 verses and yet Shiva. Namami Shamesha Danivadayokam Vibam Yapakam Dhammave Deshayokam Nidam Nigunam Nivikapam Niham Sidakashamakashavasam Bhatiham Nilakara Omkara Muram Suriham Shirakana Bodhitam Isham Garisham Karalam Mahakar Kamam Kripalam Gunagara Sansara Param Natoham Tusharaze Sankashakaram Gambhiram Manobhuta Koti Prabhashi Shariram Satanmalikallali Charuganga Asadbala Balendu Kanthe Pujanga Chalit Kundalam Brusunitram Vishalam Prasannananam Neelakancham Dayalam Rugadisha Charmambaram Mundamalam Priyam Shankaram Sarvanatham Bhajami
प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जन आनंद अदाता पुराई चिदानंद साधो मोहपहारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभु मन्मथारी नयावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेव नराणां न तावत् सुखं शान्ति शान्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतदिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजं न सोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽप्यं जराजन्म दुःखौकतप्यमानं प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो नमः शिवाय 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 नमः शिवाय. It was a beautiful experience having this Rudrashtakam class with all these sweet kids. We worship three-eyed Bhagwan Shiva, one who is fragrant, who nourishes all, just like a ripe fruit falls from the bondage of his stem, the same way, may we be liberated from death and from mortality. That's what Mahamrityunjay mantra invokes. Let's chant Mahamrityunjay mantra with Naman. अब सबको मेरा प्रणाम, मेरा नाम नमन है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षयमामृतात्। 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 ओम
त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षयमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षयमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षयमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षयमामृतात्. Thank you so much, Naman. Shiva, known as Nataraj, is the master of dance. He also did Tandav on Mahashivratri night. Let's watch Tandav performance by Alicia Kohli. Kavita ji, please start your video. Yeah. How do I share screen? Here, share audio. We can see her. Canadians are dying of overdoses. Thank you so much, Alicia.
It was a beautiful performance. It reminded us of the time we used to watch Om Namah Shivaya in our childhood. Now, according to another story, Bhagwan Shiv manifested in form of lingam on Mahashivratri. Lingam is a Sanskrit word that means pratik or a symbol. Now, Mona ji is bringing a bhajan for us to praise Bhagwan Shiva and his different names to sing in devotion to the Almighty. Namaste everyone. Feel free to sing along. I will be singing this bhajan, but आप भी अपने अपनी जगह पे जहाँ हैं, please sing along with me. बोलो भोले शंकर की जय. आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा. आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा. निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा. निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा. निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वरा जय जटाधर अभयंकरा. निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वरा जय जटाधर अभयंकरा. शूलपाणि त्रिशूलधारी औगणी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा. शूलपाणि त्रिशूलधारी औघड़ी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा. नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशाप तम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा. नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशाप तम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा. जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा. जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा. जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा. जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा. आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा. आशुतोष शशांक शेखर
चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। जय भोलेनाथ की। सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। Om Namah Shivaya. Very, very beautiful performance, Monaji. And we all enjoyed it so much. All right. Now is the time for Kahoot quiz. The kids are waiting for that. Let's hand it over to Kashvi for the quiz. I will, Kashvi, I'm going to make you the co-host. Give me 1 minute. Okay. Everyone is ready. You already are the co-host, I think. Can you please try to see if you can share? Okay, let's see. I can share. Perfect. We can start and we can give everyone a minute or so to log in. Okay. Here's the pen for the Kahoot quiz. Okay, everyone, please use this game pin. Go to play.kahoot on your devices and use the game pin that you see on the screen. 7776211. 7776211. Great, we see 2 players. I will repeat the code 7776211. You can also see it on the screen. Great turnout. Everyone, please join. Even parents can join. All of us should play this. Kashri has created very, very creative questions for us. Anya, I don't see you. You should join. Okay, Kashvi, I think we can start if you're ready. Yeah. So everyone ready? There you go. Mahashivratri is celebrated in the Hindu moon. Wait. Oh. What happened? Oh, Sweetie's in the range.
Kashvi, we will go through all the answers at the end just so everyone can learn, okay? One more. Oh, I'm still in the lead. Oh, I guys, motivation. None of this. And now the last question. Dia, someone has one. Who is humble? Okay, the winner has to share their name with us. Who is it? Who is humbled? Who is it? Sorry. Who is humbled? It's me. Can we know your name, please? Yashas. Yashas, good job, Yashas. Navita ji, congratulations. बहुत बढ़िया. Thank you, Mona ji. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. So सब बच्चों ने देखे हैं, लेकिन do you mind if we take 2 minutes to just go through the answers quickly? Yes, sure, we should. We can go, we can share. अगर हम देख रहे हैं सुनीति जी, I would let you decide on that on the timeline. Yeah, I think we are going above. Okay. beyond- तो सब बच्चों को हाँ बस इतना ही बोलेंगे कि काशवी ने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो आपको मटेरियल आपके साथ किया गया है शेयर. So make sure you will go through that material and Kashvi, thank you so much. Beta, this was wonderful. Great job. And congratulations to winners. बहुत अच्छे. Suniti ji, we can take on the next. Thank you, Mona ji. Kashvi, it was a very beautifully planned quiz. Oh, the questions thank were not too long and kind of tricky too. Thank you. Mhm. With all, let's start
Shiv Chalisa with Kavita ji as we are progressing towards the closing. Om Namah Shivaya, everyone. जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कहता अयोध्या दास तुम देओ भय वरदान जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नागफनी अंग गौर शिर गंग बहाए मुंड माल तन चार लगाए वस्त्र खाल पगंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे की हवे दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्यारी करत शूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन क्षयकारी नंदी गण सोहत हैं कैसे सागर मध्य कमल हैं जैसे और गण राओ या छवि को कही जात न काओ देवन जब ही जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा कियो उपद्रवतारक भारी देवन सब मिल तुम ही कुहारी तुरत शरान नाप पठायो लवनी मेष मह मार गिरायो आप जलंधर अस्त्र संहारा सुष तुम्हार विदित संसारा त्रिपुरा सुरसन युद्ध मचाई तभी कृपा करी लीन बचाई कियो तभी भागीरथ बारी पुर प्रतिज्ञा तभी पुरारी दानिन मैं तुम समको नाही सेवक स्तुति करत सदाही वेद नाम महिमा तब गाई अकत अनादि भेद नहीं पाई प्रकटी उततिम धन में ज्वाला जरत सुरासुर भय बेहाला कीन दया तह करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब किन्हा जीतक लंक विभीषण तिन्हा सहस कमल में हो रहे धारी कीन परीक्षा तब ही पुरारी एक कमल प्रभु राखियो जोई कमल नयन पूजन जह सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भये प्रसन्न दिए इच्छित वर जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे त्राही त्राही मैं नाथ पुकारूं यही अवसर मोहि आनो बारो लै त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहि आनो उबारो माता पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हरु अब संकट भारी धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई जांचे वा फल पाही स्तुति कही विधि करूं तुम्हारी क्षमो नाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन विघ्न विनाशन मंगल कारण योगी ये मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवावे नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए जो यह पाठ करे मन लाई तापर होता शंभु सहाय रिनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पाप नहारी पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद दही होई पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा शंकर सन्मुख पाठ सुनावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे जन्म जन्म के पापन शावे अंतवास शिवपुर में पावे कहे अयोध्यास तुम्हारी जान इस कल दुशरु हमारी नित्य नेम कर प्रात ही पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मकसर छठी है मंत्र तो संवत 64 जान स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण किन कल्याण ओम नमः शिवाय Om Namah Shivaya. I will ask Suniti ji to do the aarti. Yes, Mona ji, can we put everyone in one screen for the aarti? Yes, I can try that. But we can mute everyone else to avoid the echo. That sounds good. I think we can do gallery view. Let's do that. Can you do that? Yeah, I just did gallery view. Thank you. Om Jai Shiv Onkara Swami Har Shiv Onkara Brahma Vishnu Sada Shiv Bhole Bholenath Mahadev Ardhangi Dhara Om
जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज भोले दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता शंकर रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, भोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता संहरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वाम भागं। पाणो महासायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात्, पीताम्बराधरुण विभं फलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात्, कृष्णात् परं कमपि तत्त्वमेहं न जाने। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं, दनुजवन कृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी,
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते सर्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। I'll call upon Mona ji to conclude today's celebration. Thank you so much, Suniti ji, and thank you everyone who participated and made this event so successful. We are always looking for volunteers and performers like you who can make all our children and our next generation learn and see more blessings from all of the parents. Today's event was solely done by the Nari Shakti team. Thank you to Suniti ji, thank you Kavita ji, Neeru ji, bahut thank you. Lakshmi ji, your performance was great. Rujula, we are really proud of you. You did really wonderful today. Pavitra, you sang really well, and thank you for participating in the shloka lessons last month. Shubha ji, बहुत सुंदर आपने और स्वास्तिक जी ने गाया, बहुत अच्छा लगा. Adya, thank you so much for participating, and you are always welcome. Please be the first one to join as always. Kavita ji, again, Alicia did wonderful. सबको बहुत pranam. And just on Anuji, धन्यवाद. अब आपको मैंने पहली बार यहाँ पे देखा है, but you're most welcome. Please stay connected with us. We are looking for volunteers like you who are dedicated to Hinduism, who are dedicated and devoted towards promoting the Indian culture. And that's how we can actually, inculcate into our next generation, our children as well. Lakshmi ji, Advait, we did not know this talent in him. I really appreciate. You sang very, very well, and we need to see more of it. Yeah. And बहुत अच्छा था. I just wanted to say a little words about what is coming up. Kavita ji is working to organize another shloka lessons by next month, I think. Kavita ji, do you have any update on that? When would it is especially for ladies. Okay. We are planning to celebrate Navratri. So there will be 3 shlokas. Suniti ji will teach us those as well. So Agla Sotra, Siddh Kunjika Stotra, and there is one more. And it's all in Sanskrit. We have read them in Durga Stuti in Hindi, but we want to learn in Sanskrit now. This will be adventure for us. And we can read all these in like 15-20 minutes every day. So it's not going to take a lot of time. So we will figure out what time suits us during Navratras, and looking forward to start the classes again. I think ladies just need 2 or 3 classes, not more than that. You have very high expectations of us. We will try to meet them. We have all read Sanskrit, right? So most of us know Sanskrit, right? Just need to know how to pronounce the words. That's it. Absolutely. So thank you so much. And now that this event is successfully completed, I'm pretty certain that the Naha core team is again going to work on upcoming events. Please get your ideas coming in the group. We are here as a family. Everybody's ideas are welcome, and we want to make sure that everybody's heard, and we follow the direction that each one of us would like to follow. Okay.
So धन्यवाद once again सुनीति जी, बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन आपका, बहुत बहुत. Thank you very much. Namaste until we meet again, hopefully soon. Namaste everyone. Namaste. Thank you so much. Thank you. Wonderful celebration. Thank you. Do you want to stop the recording?